Bismillahirrahmanirrahim. Unit number 7 will be discussed in this lecture. Hubble. Look at the night sky and you see primarily. Primarily means mainly. Darkness. A vast. Vast means huge, great. Multitude means collection of glittering. Glittering means shining. Sparks mean glowing particles. Drift means move slowly. Over our heads, scattered means spread, distributed across the sky. Our gaze means look. Register means note, observe. Their beauty, but little else our vision cannot bring these dazzling. Dazzling means shining. Pinpoints, tiny drops into focus, concentration. Observe means note. Their true nature to our eyes, they are mysteries. Mysteries, something unknown. तो राइटर बता रहा है कि नाइट टाइम जब आप देखते हैं स्काई तो मेनली आपको तारीकी नज़र आती है। एक बहुत बड़ा ग्रुप चमकते पार्टिकल्स का जो है वो मूवमेंट कर रहा था हमारे सरों के ऊपर और ये स्प्रेड होते हैं ओवर द स्काई। फिर हम इन चीज़ों को जब नोट करते हैं तो इनकी ब्यूटी नोट करते हैं और उस वक्त कोई और चीज़ नहीं नोट कर सकते, लेकिन हम इन चीज़ों को कंसंट्रेट फोकस नहीं कर सकते, इनके ट्रू नेचर को नहीं ऑब्जर्व कर सकते। हमारे लिए ये मिस्ट्रीज होते हैं, अननोन होते हैं। ह्यूमैनिटी है शॉर्ट सी की सेकंड थर्ड फॉर्म है सर्च्ड। टू मूव या स्ट्रगल्ड टू मूव बियॉन्ड द लिमिटेड विजन ऑफ बायोलॉजी सिंस द डेज ऑफ गैलीलियो टेलीस्कोप्स हैव ब्रॉट the heavens to earth. Expose mean unveiled. Revealed. Destined mean far away. Treasures of the universe revealed countless. Countless mean numerous. Latadad. Galaxies clocked means covered. Within the apparent. Apparent means seeming. Zahir. Darkness. And perhaps no telescope has done so much to bring the wonder and reality of the universe home as the Hubble Space Telescope. इस पैराग्राफ में अब राइटर हबल की अचीवमेंट बता रहा है कि जितना हबल ने किया है अननोन चीज़ों को रिवील किया, किसी और टेलीस्कोप ने नहीं किया है। फिर बता रहा है कि गैलीलियो के टाइम से लेकर साइंटिस्ट ने या साइंस ने कोशिश की है कि बियॉन्ड और विजन जहाँ तक हम दे इससे अबव मतलब अर्थ से अबव चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए। बाकी टेलीस्कोप्स की बात है कि उन्होंने रिवील किया, एक्सपोज किया दूर की जो ट्रेजर्स थे यूनिवर्स के, जो पहले कवर थे डार्कनेस में, शायरी तौर पर सीमिंगली जो हमें डार्कनेस नजर है उसमें कवर चीज़ों को एक्सपोज किया, रिवील किया। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टेलीस्कोप इन ऑर्बिट अराउंड अर्थ वाज फर्स्ट मेंशन इन a series in a science book by F.Sc. This telescope would peer means look at the universe from well above. The interference mean अर्थ, जहाँ पर अर्थ की इफेक्ट जो है वो फील हो सकती वो of the earth. Or turbulent means violent. Atmosphere which relentlessly means mercilessly. Blurs means distort, चेंज करना इमेज को या तस्वीर वगैरह को. द व्यू इन ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप एंड मेक्स स्टार ट्विंकल. ट्विंकल मीन्स शाइन. अहेड ऑफ हिज टाइम. क्लार्क आउटलाइन. आउटलाइन मीन ड्रा, स्केच बनाना. The advantages of in orbiting. Orbiting means revolving, rotating, circulating. Telescope compared with a telescope that might at some future point be installed on the moon's surface as had been suggested decade 10 years earlier. Even the moon's extremely tenuous mean weak, slight atmosphere might affect certain delicate means weak observation. He wrote in observatory is a place from where observation is made. In space would be able to survey the complete sphere of the sky. टेलीस्कोप की जो कॉन्सेप्ट है ये पहली बार आर्थर सी क्लार्क की बुक में मेंशन किया गया है। साइंटिस्ट यूनिवर्स को जब देखते थे तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से अबव उन्होंने देखना था, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से जो व्यू है वो इफेक्ट होता था, ब्लर होता, डिस्टोर्ट होता था। फिर क्लार्क ने जो किया था वो उस वक्त उस ज़माने के हिसाब से एडवांस था। उसने स्केच बनाया था, आउटलाइन बनाया, डिस्क्रिप्शन दी थी एडवांटेजेस की, जो कि एक ऑर्बिटिंग रिवॉल्विंग टेलीस्कोप दे सकता था एक ऑर्डिनरी टेलीस्कोप की निस्बत। फिर क्योंकि मामूली लेयर भी हो इफ़ेक्ट करता है ऑब्जर्वेशन को, तो इसलिए ऑब्जर्वेशन अबव अर्थ एटमॉस्फेयर करनी जो थी ये सजेस्ट किया गया। फिर
एक बता रहा है कि ऑब्जर्वेशन, अगर ऑब्जर्वेशन मतलब स्पेस की किसी जगह से अबव अर्थ किया जाए तो इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि वो एक अथेंटिक, एक्यूरेट, प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन होगी. टुडे द ऑर्बिटिंग टेलीस्कोप, ऑर्बिटिंग मीन रिवॉल्विंग, सर्कुलेटिंग. Clark envisioned mean imagined, conceived, thought of, is known as the Hubble Space Telescope, and it has been in service since 1990. Before Hubble was launched into orbit around Earth in 1990, there was lots of scientific discussion about what a space telescope might find. The top to-do list. Top to-do list means the things that need to be performed. Items for Hubble were to measure the expansion means continuation. Rate of the universe, to find distant means remote, far away. Galaxies group, combination of stars. Determine means find out. The chemical content means composition of the space between the galaxies, but everyone expected Hubble's most important discovery would provide answer to questions that astronomers, people who study astronomy, the study of the content or the universe above earth, celestial body, heavenly bodies की study करने वाले astronomers होते, do not know how to ask and find objects that were not yet conceived mean imagined, thought of. तो हर एक बंदा बातें कर रहा था कि हबल कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कवर करेगा. फिर उसमें ये बात है कि एक लेस बताई गई थी कि उनमें से ये था कि इसकी कंटिन्यूएशन रेट किस रेट पे ये एक्सटेंड होती है दूर की जो ऑब्जेक्ट्स है, इसी तरह केमिकल कंटेंट, कंपोजिशन गैलेक्सीज का. लेकिन इसके अलावा कुछ ये भी चीज़ें थी कि हबल वो चीज़ भी फाइंड आउट करेगा जो अब तक एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचे भी नहीं थे. Still, no one imagined that Hubble's photographs of deep space would be so utterly means extremely, jaw-droppingly means surprisingly beautiful, or that the picture would have a purely visceral means natural, innate, instinctive, जो by birth हो. Appeal mean interest to an entire generation, making Hubble a household word. Synonymous means equal. Synonym with spectacular mean amazing. Images of the cosmos mean universe. तो उसके बावजूद किसी ने ये इमेजिन ही नहीं किया था कि हबल इतना हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा और नेचुरल अपील लोगों में पूरी जनरेशन में क्रिएट करेगा, और उस वजह से ये रोज़मर्रा में यूज़ होने वाला एक वर्ल्ड की इक्वल होगा. Hubble, a joint project of NASA and European Space Agency, orbits Earth 353 miles 569 किलोमीटर above the planet's surface. अभी इसकी वो रोटेशन बता रहा है. Its position allow it to circle free of Earth atmosphere which distort ऑलरेडी हमने पढ़ा, प्रीवियस पेज पे आया था. Blurs and blocks light from the cosmos. Block mean रिकॉर्ड डालना. This give Hubble a pristine mean pure. View typically means commonly. Unmatchable mean matchless, peerless. By ground based telescope. हबल चूँकि अर्थ से अबाव व्यू करता था, सर्वे करता था, तो ये मैचलेस, मतलब कोई और टेलीस्कोप के लिए ये पॉसिबल नहीं था. इफ़ द मेन्स आई वॉज एज सेंसिटिव एज हबल, ही कुड लुक फ्रॉम इस्लामाबाद एंड सी द ग्लो मीन्स शाइन, fire, heat, of a pair of firefly, a kind of insect whose tail produces light in London. अगर इंसान इतना सेंसिटिव हो, मतलब हसास हो, फील कर सकता हो, पावरफुल हो जितना हबल है, तो वो इस्लामाबाद से व्यू कर सकता था लंदन में किसी फायरफ्लाई की से जो लाइट उमिट होती है. If the fireflies were 6 feet apart, he could resolve means solve, understand that there were two of them side by side. उसकी ये भी फाइंड आउट कर सकता है कि फीट जो है साइड बाय साइड है, अगर तो ये पॉसिबल होता. एक इमेजनरी सिचुएशन है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है जो हम इमेजनरी सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं. हबल ऑर्बिट मीन रिवॉल्व, सर्कुलेट. अर्थ मूविंग एट द स्पीड ऑफ about 5 miles per second, 8 किलोमीटर पर सेकंड, फास्ट एनफ टू ट्रेवल फ्रॉम चित्रौल टू कराची इन अबाउट 3 मिनट. इसकी स्पीड बता रहा है, इतनी स्पीड से रोटेशन कर सकता है, सर्कुलेशन, जो कि आप अगर नॉर्मल डे में बात
नॉर्मली बात करें तो इस स्पीड से चित्राल से कराची आप 3 मिनट्स में ट्रैवल कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ ईयर हबल सर्कल्स अर्थ ओवर 500 टाइम्स। अब उसकी बता रहा है कि इतनी रोटेशन वो कर सकता है एक ईयर में। एज द टेलीस्कोप विप्स, इट मीन मूव फास्ट विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, बगैर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के फास्ट मूवमेंट। Once every 97 minutes, it collects light, much more light than human eyes can hope to capture, attract. On their own, light that reveals everything. Reveal mean disclose, opens everything from the nature of storms on Jupiter to some of the most distant mean far away remote galaxies in the universe. अब बता रहा है कि हबल जब मूवमेंट करता है, ट्रेवल करता है, सर्कुलेशन करता है तो लाइट कलेक्ट करता है और वो लाइट जो है ज़्यादा है जो हम कैप्चर कर सकते हैं ख़ुद से। और इसी तरह उस लाइट की मज़ीद डिस्क्रिप्शन है कि वो रिवील करता है गैलेक्सीज़, जुपिटर, स्टॉर्म वगैरह, मतलब जो जितने भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है गैलेक्सीज़ में, यूनिवर्स में, उसको रिवील कर सकता है। इस लाइट की डिस्क्रिप्शन है। हबल्स सुपरविजन has shown us places in the cosmos means universe, that no generation of humans before us has ever seen. The Hubble images have unveiled means exposed, revealed, that beyond the starry sky we see on a clear night there is another universe in undiscovered country of discordant mean जो जिसमें हार्मनी ना हो, नॉट इन हार्मनी। ऑब्जेक्ट्स वायलेंट एक्सप्लोजन एट कैटाक्लिस्मिक मीन्स वायलेंट अनकंट्रोल एक्सप्लोजन, कोलिजन मीन कोलाइडिंग। तो हबल ने एक्सपोज किया है कि जो हम देखते हैं इससे अबाव जो है काफ़ी जो हमें क्लियर नज़र आता है नाइट, इसके आगे काफ़ी सारे एक्सप्लोजन्स हो रहे होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कोलिजन्स होती है। गैलेक्सीज प्लो मीन्स मूव fast, move with force into one another. Stars erupt means eject, produce. From firestorm, intense fire of gas and dust and light. Newly forming stars shoot out sabers, तलवार शक्ल में light. Jets of gas as birth announcement to the universe. All this drama plays against a pitch black drop means completely dark. Backdrop means background, that is unimaginably means unbelievably, infinite means unlimited. तो ये अब स्टार्स की इरप्शन होती है, स्टार्स इवॉल्व होते हैं, लाइट इवॉल्व होती है, फिर लाइट स्वॉट फॉर्म में प्रोड्यूस होती है और इससे ये अनाउंसमेंट होती है। तो मतलब डिफरेंट एक्सप्लोजन्स, कोलिजन, और ये जो है हम जो सीमिंगली देखते हैं कि क्लियर स्काई है, इसके पीछे इनफाइनाइट अनलिमिटेड एक्शंस, एक्टिविटीज़, बैकग्राउंड के आगे जो है बहुत कुछ हो रहा होता है। A single Hubble snapshot means picture, image, can portray, mean draw, show, display the universe as awesome, surprising, mysterious, mean unknown, and breathtaking, means shocking, and at the same time chaotic, mean disturbing, overwhelming, mean extremely large, extremely powerful, and foreboding, mean giving नेगेटिव साइंस, इवल साइंस। तो एक सिंगल इमेज हबल का पोर्ट्रे कर सकता है कि ये ऑसम है, खूबसूरत कह सकते हैं, मतलब शॉकिंग, सरप्राइजिंग है, मिस्टीरियस, अननोन है, और इसी तरह डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा, इसकी लेंथ भी ज़्यादा है, और नेगेटिव इवन, क्योंकि डिस्टर्बिंग सिचुएशंस, कोलिजन्स, कोलाइडिंग चल रहे होते हैं, तो इससे ये एक कि फ्यूचर में कुछ नेगेटिव होने वाला है। द स्टोरी दैट द हबल टेल्स अबाउट द यूनिवर्स नोज नो नेशनल, पोलिटिकल और आइडियोलॉजिकल बाउंड्री। न नजरियाती, न सियासी और न कौमी कोई बाउंड्रीज है जो स्टोरीज हबल रिवील करता है। द इमेजेस आर सो ओवरपावरिंग मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड हम्बलिंग मीन्स मेकिंग वन फील्स हम्बल, किसी को ये एहसास दिलाता है कि वो हम्बल है, वो वीक है। दैट दे हैव टच मीन्स अफेक्टेड पीपल ऑफ ऑल एजेस, क्योंकि ये पावरफुल भी ज़्यादा है और हम्बलिंग भी है, मतलब इसकी इम्प्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, तो हर एज के लोगों को इसने इफेक्ट किया। दीज पिक्चर्स आर अ रिमाइंडर दैट वी इनहेबिट मीन्स लिव, रिसाइड,
In a tiny mean very small, planet in a vast mean huge, great, universe with many remaining unknown. इस बात का रिमाइंडर है कि हम एक यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे और भी है। एक ये है और इसके अलावा और बहुत सारे अननोन्स है, अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है। सिंस इट्स लॉन्च इन 1990 द 12-ton बस साइज हबल टेलीस्कोप हैज़ मेड मोर देन 1 million observations and looked at over 38,000 celestial mean heavenly objects. The Hubble archive mean register records are filled with more than 500,000 images. The amount of astronomical data collected is equivalent means equal same to about 50 million books or 5 times the printed collection of the US Library Congress. अब इसकी बता रहा है कि कितनी अभी तक इसने ऑब्जर्वेशंस किए, तकरीबन 1 मिलियन ऑब्जर्वेशंस, एक 38,000 हेवनली ऑब्जेक्ट्स की सर्वे की है। इसकी जो रिकॉर्ड है 500,000 इमेजेस वहाँ पर है, और जिनके पास डेटा है एक लाइब्रेरी के साथ उसकी कंपैरिजन है तो उससे 3 गुना ज़्यादा, और 50 मिलियन तक बुक्स बता रहा है कि इनकी कलेक्ट। In 1983, NASA named the telescope after the early 20th century American astronomer Edwin P. Hubble, who is credited mean entitled, associated with the 1920 discovery that galaxies combination of stars are huge, great, remote, distant, दूर, far away, systems of billions of stars. The most powerful space camera ever built was introduced on Hubble in 2009 along with many other fixes. इसकी जो डिटर्मिनेशन हबल की मतलब कैमरा इंस्टॉल किया गया और उसके साथ और जो रिक्वायरमेंट्स थी, एंड हबल वाज नाउ परफॉर्मिंग एट हायर लेवल देन एवर बिफोर। 1920 की डिस्कवरी जो है ये इस बंदे एडवर्ड पी हबल जो कि एक एस्ट्रोनॉमर था, तो उसके नाम पर ये टेलीस्कोप को भी नाम दिया गया है, जिसने ये डिस्कवरी दी थी कि गैलेक्सीज जो है स्टार्स की कम्बिनेशन वो इसकी लेंथ ज़्यादा है, दूर है और बिलियंस ऑफ स्टार्स की कम्बिनेशन है। फिर ये 2009 में हबल को इंस्टॉल किया और साथ में और भी फिक्स रिक्वायरमेंट जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, और फिर इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो ज़्यादा हायर लेवल पर होने लगी। When we look at star, we look at history, the light that arrive at our location from the furthest mean remotest, सबसे दूर objects in the universe as light that left those objects billions of years ago, so we see them as they appeared long ago. The most distant mean remotest, दूर, furthest. Galaxies look strange, smaller, irregular, lacking clearly defined shape. No telescope before Hubble had the resolution means viewing power to see these distant, remotest, furthest, दूर galaxies. हिस्ट्री को देखने का ऐसा है, ये स्टार्स को देखने का ऐसे जैसे हम क्योंकि ये जो स्टार्स होते हैं ये इनकी लाइट्स जब हम तक आती है तो ये वो लाइट्स होते हैं जो बिलियंस ऑफ स्टार पहले ही इमिट कर चुके होते हैं ये स्टार्स लाइट जब हम देखते हैं। सबसे जो दूर गैलेक्सीज है वो स्ट्रेंज और उनकी कुछ ख़ास शेप नहीं होती, लेकिन हबल की ये रेजोल्यूशन है कि इसको व्यू कर सकते हैं, कोई और टेलीस्कोप इसको व्यू भी नहीं कर सकता। Astronomers focused concentrated Hubble on what appeared to be a nearly empty page, mean a piece of land of sky for 10 days. The result contained 10,000 galaxies at various stages of evolution, mean development, and cause a patch of sky smaller than the size of a pinhead held at arm's length. To photograph the entire sky in this detail would require 13 million Hubble images with comparative exposure. The stunning means surprising, shocking image was called the Hubble deep field. अब ये जो फोकस किया था इन्होंने हबल को एक पीस पर एक जगह पर स्काई में 10 डेज़ के लिए, तो रिज़ल्ट क्या हुआ, वहाँ पर 10,000 गैलेक्सी से, और वो डिफरेंट स्टेजेस में थे डेवलपमेंट, कुछ ज़्यादा डेवलप कुछ कम डेवलप्ड। फिर वो जो था एक वो मतलब जो पीस ऑफ स्काई वो इनको जो नज़र आ रहा था बिल्कुल स्मॉलेस्ट नज़र आ रहा था। अब वो बताया कि मज़ीद इस तरह को फ़ोटोग्राफ करने के 13,000 हबल इमेजेस जो है वो रिकॉर्ड, और वो भी ज़्यादा एक्सपोजर के साथ। एक्सपोजर मीन के चीज़ों को व्यू कर सकता हो, चीज़ों को ओपन कर सकता हो, एक्सपोज कर सकता हो। फिर वो जो इमेज था इनको उन्होंने नाम दिया था हबल डीप फील्ड।
उस वक्त जो इमेज इन्होंने व्यू किया था। कंपोजिशन मीन्स मेकअप, केमिस्ट्री ऑफ द कॉस्मस मीन्स universe. Finally, eventually came into focus concentration in the late 1990s and early into the first decade, 10 years of the 21st century. The part of the universe with which we are most familiar, i.e. planets, moon, stars, nebulas and galaxies, account for less than 1% of the universe total contents. Composition नॉन luminous जो शाइनिंग ना हो, जो शाइनिंग क्वालिटी जिसमें ना हो. मैटर मोस्टली हाइड्रोजन डिस्पर्स डिस्ट्रीब्यूटेड spread throughout space is about 3%, while the rest is the largely mysterious unknown dark matter and the completely mysterious dark energy. कंपोजिशन बता रहा है, मेकअप बता रहा है, केमिस्ट्री बता रहा है. 1990s में कह रहा है कि ये पहली बार फोकस किया गया. तो जो चीज़ों से हम मोस्टली वाकिफ़ है, प्लैनेट्स, मून, स्टार, ये सिर्फ और सिर्फ 1% है. इसके अलावा जो नॉन लुमिनस है वो सिर्फ और सिर्फ 3% है. बाकी जो रह गए वो ऐसी चीज़ें हैं जो अननोन है, मिस्टीरियस है, डार्कनेस है वहाँ पर. और यूनिवर्स स्टार्टेड विद अ बैंग, वो थ्योरी को रेफर कर रहा है, एक धमाका हुआ और दुनिया वजूद में आई. एंड एक्सपेंडिंग, और उस वक्त से ये स्प्रेड हो रहा है. द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज इंक्रीजिंग विद टाइम. द डेटा रिसीव्ड डिक्लेयर्ड दैट द यूनिवर्स वाजंट स्लोइंग डाउन एट ऑल एंड was previously thought, rather it was speeding up as though something were propelling, mean pushing it, driving its expansion continuation faster and faster. यूनिवर्स की स्टार्ट की बात कर रहे हैं, एक धमाके से स्टार्ट हुआ जैसे कि बिलीफ है, और उस वक्त से इसकी एक्सटेंशन, कंटिन्यूएशन, एक्सपेंशन जो है ये इंक्रीज़ हो रही है. पहले तो ये सोचा जा रहा था कि ये इसकी एक्सपेंशन स्लो हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, इंक्रीज़ हो रहा है. और जैसा कि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई चीज़ इसको पुश कर रहा हो. Hubble has thoroughly, completely, entirely, totally studied stars. The closest star our Earth is the Sun. It is considered typical, common, normal, average of middle-aged star formed from a collapsed cloud of gas and dust. Stars are born in clouds of gas and dust. One such stellar means relating to star nursery, जहाँ पर birth होती है star की. The Orion Nebula, an enormous piece, huge, great cloud of gas and dust many light years across. मुकम्मल तौर पर स्टडी किया है स्टार्स को. इसके अलावा क्लोजेस्ट जिसको हम देख सकते हो सन है, जिसको कॉमनली एवरेज हम समझते हैं. फिर ये बना किस तरह है, क्लाउड और डस्ट की कम्बिनेशन से, और ये मोस्टली स्टार्स का यही होता है ये कंपोजिशन. फिर उसके बाद स्टार नर्सरी और ये नेबुला जो कि एक एनॉर्मस क्लाउड्स और है गैस और डस्ट की कम्बिनेशन है. मतलब बहुत ईयर्स की बाद ये फॉर्म होती है. डिफरेंट साइंटिफिक डिस्कशन है अब किस तरह फॉर्म होती है. ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्रोसेसेस के बाद फॉर्म होती है. टर्बुलेंस, डिस्टर्बेंस फ्रॉम डीप within these clouds create density region called knots. ऐसी रीजन जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उनको फिर उसने नाम दिया है knots का. These knots contain sufficient, means enough ample mass weight that the gas and dust can begin to collapse from gravitational attraction. As it collapses, pressure from gravity causes the material at the center to heat up, creating a protostar. Protostar is a collection of gas and dust. It's in space. तो ये नॉट्स की क्योंकि वेट काफ़ी होती है तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से ये कोलैप्स होते हैं. फिर उसके बाद जब इसकी कोलिजन होती है हीट की वजह से यहाँ पर प्रोटोस्टार मतलब कलेक्शन फॉर्म होते हैं गैस और डस्ट की. वन डे दिस कोर इसका जो सेंटर है बिकम्स हॉट एंड इग्नाइट मीन्स फायर. फ्यूजन मीन ब्लेंड, मिक्सचर, कम्बिनेशन है. स्टार एस बर्न, यहाँ पर हीट होती है कि फ्यूजन मिक्सचर बनती है और उससे स्टार की बर्थ होती है. नॉट ऑल द मटेरियल इन द कोलैप्सिंग क्लाउड्स एंड्स अप एट अ पार्ट ऑफ अ स्टार. द रिमेनिंग डस्ट कैन बिकम प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स. ज़रूरी नहीं है कि जो भी यहाँ पर
हीट अप हो तो उसके नतीजे में स्टार फॉर्म हो। इसमें कुछ और भी प्रोडक्ट्स मतलब डस्ट, इसी तरह एस्टेरॉइड्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो सन से काफ़ी डिस्टेंस पर मूवमेंट कर रहा होता है, कॉमेट्स, शूटिंग स्टार्स भी हो सकते हैं, और इट मे रिमेन डस्ट, या ये डस्ट की डस्ट ही रहेगी। द केमिकल makeup mean composition of stars revealed exposed through spectroscopy is a kind of survey carried out through instruments की ज़रिए, स्पेक्ट्रोस्कोप्स के ज़रिए जो सर्वे होती है उसके कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। Depends on the material in which they originate. In the early universe, stars were formed from matter that lacked most elements except for hydrogen and helium. The other elements have been and still are being created in the interior, जो अंदरूनी parts होते हैं। अब स्टार थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन, कम्बिनेशन, मिक्सचर, blend process that new materials is eventually finally recycled into subsequent means coming generations of stars and planets। अब ये जो मेकअप है कंपोजिशन स्टार की, ये जब स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंटल सर्वे के ज़रिए इसको रिवील किया गया तो डिपेंड करता है कहाँ से ये ओरिजिनेटेड है। शुरू में स्टार्स ऐसे एलिमेंट से फॉर्म हो जिसमें मोस्टली एलिमेंट्स की लेक नहीं एग्जिस्ट करती थी हाइड्रोजन हीलियम के अलावा। फिर ये जो इनकी अदर एलिमेंट्स थे इनकी इंटरनल पार्ट्स में, वो क्रिएट होते थे फ्यूजन मतलब मिक्सिंग ब्लेंडिंग प्रोसेसेस से। आखिर में ये जो फिर मटेरियल था ये रिसाइकल किया जाता है बाद में आने वाली जनरेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स के लिए। द ग्रुपिंग ऑफ स्टार फ्रॉम form together can vary means range from a few stars to many hundreds or thousands. The stars in each cluster mean combination have a variety of masses. The most massive stars are rare while the least massive means huge, great, or the most numerous means unlimited. Hubble has probed studied deeply star cluster of all sizes and use spectroscopy or instrumental survey. Determine means find out. The detail mean comprehensive, inclusive. केमिस्ट्री ये मैंने प्रीवियसली भी बताया था, सी स्मॉल हो तो इसका मतलब है कंपोजिशन, सी कैपिटल हो इसका मतलब फिर प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट होगा। इसी तरह टाइटेनिक टी स्मॉल हो तो इसका मतलब होगा ह्यूज ग्रेट, टी कैपिटल हो फिर ये शिप को रेफर करेगा, प्रॉपर नाउन होगा। इन स्टार क्लस्टर मेंबर बाय टेकिंग प्रिसाइज मीन एग्जैक्ट observation of star cluster members, scientists using Hubble can determine, find out. Luminosity means shiningness and temperatures. When their nuclear fuel is exhausted mean used, ख़त्म होना. The most massive mean huge, great. Explode mean collide in a spectacular fashion, amazing. Called a supernova. Supernova explosion of stars leaving behind neutron star, black holes or nothing at all. स्टार्स की ग्रुपिंग रेंज करती है, मतलब कुछ स्टार्स हो सकते हैं या ज़्यादा स्टार्स की कम्बिनेशन, फिर इनकी मुख्तलिफ वेट्स होते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्टार्स जिनकी साइज़ ज़्यादा होते हैं, रेयर, जो बहुत ज़्यादा लेंथ वाले नहीं होते, वो लातादाद होते हैं। हबल ने इसको डिटेल में स्टडी किया है स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिटेल की इसकी कंपोजिशन क्या है। एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो ये बताएगा कि इनकी लुमिनोसिटी, टेम्परेचर्स क्या है। इसी तरह जब इनकी फ्यूल एग्जॉस्ट होती है तो एक्सप्लोजन और उसकी नतीजे में सुपरनोवा जो कि स्टार्स की एक्सप्लोजन है। पीछे न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक या कुछ भी नहीं, मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। गैलेक्सीज आर वास्ट मीन्स ह्यूज, ग्रेट। कॉस्मिक यूनिवर्स, आइलैंड ऑफ stars, gas, dust and dark matter held together by gravity. Hubble's keen means sharp. Eye has revealed mean exposed, shown. Intricate means complicated. Details of the shapes, structures and histories of galaxies, whether alone as part of small groups or within immense means huge, great clusters. From supermassive. Supermassive means very great, huge, extraordinarily. Black holes at galactic relating to galaxy centers. To giant mean huge, burst, explosion. Of star फॉर्मेशन अभी मैंने जिस तरह कहा टाइटेनिक, टी स्मॉल है तो इसका मतलब है ह्यूज, ग्रेट। कोलिजन्स
between galaxies. These discoveries allow astronomers to probe, study in detail. Current mean existing, properties mean traits of galaxies as well as extent survey how they formed and developed over time. गैलेक्सीज जो है ये स्टार्स की कम्बिनेशन है। फिर ये जो है स्टार साथ में गैस और डस्ट बाकी मैटर भी होते हैं। हबल की ऑब्जर्वेशन ने इसकी कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स को, इसकी शेप, स्ट्रक्चर और बाकी हिस्ट्री को एक्सपोज किया है, अकेली भी और ग्रुप्स में भी। इसी तरह बड़े बड़े ग्रुप्स को भी किया है रिवील। तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेंथ से लेकर जॉइंट और फॉर्मेशन कोलिजन्स जो होती है इनकी, टाइटेनिक कोलिजन, वो भी रिवील किया है। अब ये रिवील ने अलाउ किया है, हेल्प किया है एस्ट्रोनॉमर्स को कि इनकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ जो है, ट्रेड्स जो है, उनकी सर्वे की जाए, किस तरह ये डेवलप होते हैं, इवॉल्व होते हैं। Astronomers classify galaxies into three major categories: elliptical, spiral, and irregular. These galaxies span a wide range of size from dwarf means small galaxies containing as few as 100 million stars to giant mean huge, great galaxies with more than a trillion stars. Classification है elliptical, मतलब जो कर्व्ड हो, स्पायरल राउंड टाइप हो, या जिनकी कुछ स्पेसिफिक शेप ना हो, इनकी वजह से फिर उनमें कुछ ड्वार्फ मतलब बहुत स्मॉल, बहुत लार्ज भी आ जाती है। एलिप्टिकल्स विच अकाउंट फॉर अबाउट 1/3 ऑफ ऑल गैलेक्सीज वेरी है रेंज, RANGE range, from nearly circular mean round, to very elongated mean extensive. They possess comparatively little gas and thus contain older stars and are not actively forming stars anymore. The largest and rarest mean that cannot be found commonly. Of these called giant ellipticals are about 3 lakh light years across. Astronomers theorize, means speculate, assume that these are found by the mergers, mixing process, blending process of smaller galaxies. Much more common are dwarf ellipticals, dwarf already small, which are only a few thousand light years wide. एलिप्टिकल जो कि राउंड होते हैं, वेरी कर मतलब इनकी रेंज होती है, इनमें राउंड भी होते हैं, एक्सटेंडेड भी होते हैं। कंपेरेटिवली गैस और डस्ट में कम और ओल्डर स्टार्स यहाँ पर होते हैं जो मज़ीद स्टार्स की फॉर्मेशन नहीं कर रहे होते। लार्जेस्ट और जो कम पाए जाते हैं, कॉमन नहीं होते, वो जाइंट एलिप्टिकल्स है जो 3 लाख ईयर्स अक्रॉस, मतलब ड्यूरेशन उनकी ज़्यादा होती है। एस्ट्रोनॉमर्स की ये स्पेकुलेशन है कि ये मर्जिंग प्रोसेसेस में फॉर्म होते हैं। सब फिर इसकी नतीजे कंपैरिजन में कॉमन जो है वो ड्वार्फ एलिप्टिकल्स है जो कुछ लाइट ईयर्स जो है के बाद फॉर्म होते हैं। Spiral galaxies appear as flat blue-white disk of star gas and dust with yellowish bulges, means something that protrudes, उभरा हुआ, बाहर की तरफ निकला हुआ। तो इनकी अब वो शेप बता रहे हैं। डिस्क टाइप होते हैं, ब्लू वाइट, गैस एंड डस्ट, और इस तरह इनमें कुछ पार्ट जो है वो बाहर की तरफ निकली होती है। दीज गैलेक्सीज आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, नॉर्मल स्पायरल एंड बॉर्ड कहते हैं लाइन्ड स्ट्रिप्ड, जिसमें डिफरेंट कलर्स लगे हुए नज़र आते हैं। स्पायरल्स आर एक्टिवली फॉर्मिंग स्टार्स एंड कंप्राइज अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ ऑल द गैलेक्सीज इन द लोकल यूनिवर्स। स्टार्स की फॉर्मेशन इधर होती रहती है, तो इसलिए इनकी ज़्यादातर जो है इन पे कंप्राइज करता है। स्टार्स ज़्यादातर इन पे कंप्राइज करती है, मतलब ज़्यादा तादाद इनकी होती है। इर्रेगुलर गैलेक्सीज which have very little dust are neither disc-like nor elliptical. इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, जो न disc-like होते हैं न elliptical. Astronomers often see irregular galaxies as they peer means see, look, view deeply into the universe. These galaxies are abundant, means in large number in the early universe before spiral and ellipticals develop. पहले इनकी तादाद ज़्यादा होती थी स्पायरल्स और एलिप्टिकल्स की डेवलपमेंट से पहले। इसके अलावा besides from these 3 classic categories, astronomers have also identified, इसके अलावा और भी कैटेगरीज को आइडेंटिफाई किया गया है।
Many unusually shaped galaxy that seem to be in a transitory means changing, जिसमें changes आते रहते हैं. Phase means stage. Of galactic development, these include those in the process of colliding, interacting, and those with active nuclei ejecting jets of gas. इसके अलावा कुछ और टाइप्स हैं इन तीनों मेजर कैटेगरीज के अलावा जो चेंजिंग फेज स्टेजेस में होते हैं. उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कोलिजन होती है, इंटरेक्शन होती है. कुछ ऐसे होते हैं जो लाइट्स की इजेक्शन करते हैं. मतलब डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं डेवलपमेंट के. while the distances between galaxies seem large, so too are galaxies diameter. इनकी लाइंस स्ट्रेट लाइन जो है वो भी लार्ज होते हैं डिस्टेंस के साथ. कंपेयर टू स्टार्स, गैलेक्सीज आर रिलेटिवली क्लोज टू वन अनदर. They interact and even collide. When galaxies collide, they pass through each other. The stars don't crash into each other because of the immense distance between them. However, gravitational interactions between colliding galaxies could create new waves of star formation, supernovas, the explosion of stars, and even black holes. Collision do distort already आया है. Divert, blur. A galaxy's shape 4 billion years from now, or Milky Way galaxy is distant. Distant means bound. For a collision with the neighboring spiral intermediate galaxy, the sun will likely be flung. Flung means thrown away into a new region of our galaxy, but our Earth and solar system are in no danger of being destroyed. स्टार की निस्बत गैलेक्सीज आपस में करीब होते हैं, इंटरेक्शन कोलिजन होती है. जब इनकी कोलिजन होती है तो पास थ्रू होते हैं लेकिन क्रैश नहीं होती क्योंकि इनमें डिस्टेंस ज़्यादा होती है. ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस जो होती है कोलाइडिंग गैलेक्सीज में, इनसे न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन होती है और इसी तरह एक्सप्लोजन्स होती है स्टार्स की. इनसे शेप इनकी ब्लर होती है, चेंज होती है. फिर बता रहा है कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये बाउंड है. 4 बिलियन ईयर्स बाद इनकी कोलिजन होगी नेबरिंग करीब जो गैलेक्सी है. उसके नतीजे में क्या होगा कि सन जो है इसकी पोजीशन तो चेंज होगी लेकिन अर्थ डेंजर में नहीं है. Andromeda is now 2.5 million light year away, but is inexorably inevitably unavoidably that cannot be avoided. Large me falling toward the Milky Way under the mutual mean both-sided pull of gravity between the two galaxies and the invisible dark matter that surrounds them both. एंड्रोमेडा की बता रहा है कि 2.5 मिलियन लाइट ईयर जो है ये दूर है और ये इनअवॉइडेबली जो है मिल्की वे की तरफ, क्योंकि दोनों साइड से अट्रैक्शन है और साथ में मैटर की वजह से जो दोनों की साइड होते हैं ये एक दूसरे की तरफ हो रहे हैं अट्रैक्ट. द अपीयरेंस एंड मेकअप ऑलरेडी आया. कंपोजिशन, केमिस्ट्री of galaxies are shaped over billions of years by interaction with group of stars and other galaxies. Astronomers' observation led to the idea that the universe is expanding means spreading. Scientists estimate means calculate the age of the universe at 13.8 billion years based on the rate of expansion continuation. The early universe was filled mainly with hydrogen and helium, with some areas slightly denser than others. These dense areas slightly slowed the universe expansion, allowing the hydrogen and helium to accumulate means jama hona, collect into small clouds. Swirling means rotating, circulating, revolving through space. Appearance, composition इनकी जो है ओवर द ईयर जो है ये शेप्ड है, स्ट्रक्चर्ड है. फिर इनके ऑब्जर्वेशन ने ये बात फाइंड आउट की कि एक्सपेंड हो रहे हैं. एज की एस्टिमेशन लगाए तो 13.8 बिलियन ईयर्स इनकी एक्सटेंशन कंटिन्यूएशन रेट के बेस्ड पे. फिर मेनली ये हाइड्रोजन और हीलियम इसका कंपोनेंट होता था. डेंसिटी कुछ एरियाज़ में ज़्यादा कुछ में कम.
डेंसिटी की वजह से ये एक्सटेंशन प्रोसेस भी स्लो हुआ था, और फिर वो एक्सपेंशन रेट कंटिन्यूएशन रेट स्लो होने की वजह से हीलियम और हाइड्रोजन की कलेक्शन एक जगह होती थी, जिसकी नतीजे में एक्यूमुलेट इनटू स्मॉल क्लाउड, ऐसे मटेरियल जो मूवमेंट रोटेटिंग होती थी, वो आउटकम होता था इसका। Gravity caused the gas in these clouds to collapse and form the first generation of stars. फिर इसके नतीजे में stars की formation. These stars rapidly means quickly burned out. Gravity continued to collapse the clouds as other clouds came close to each other. Gravity sent them carrying. Carrying means pulling, attracting into one another, and knitted mean connected the clouds into large spinning peaks. Spinning mean revolving, rotating. As the clouds further collapsed, they became rotating disks, which amassed mean collected more gas and dust. New stars formed, creating extensive means huge large spiral arms filled with colonies of stars. ग्रेविटी की वजह से फिर इनमें जो है कोलैप्स के बाद स्टार्स की न्यू जनरेशन, ये स्टार्स की बर्निंग और फिर इसी तरह मज़ीद क्लाउड्स एक दूसरे की तरफ पुल होते थे, मतलब मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते थे। तो उसमें फिर रोटेटिंग डिस्क जिसमें ज़्यादा गैस और डस्ट की कलेक्शन होती थी, और न्यू स्टार की फॉर्मेशन, इसी तरह स्टार्स की कॉलोनीज और गैलेक्सीज जो है इसकी फॉर्मेशन होती रही। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लैनेट्स बियॉन्ड आवर ओन सोलर सिस्टम इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी मीन्स early stages, because planets in other solar system are extraordinarily means exceptional, phenomenal, difficult to see directly. Astronomers have had to come up with innovative mean creative new ways to hunt for them, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी तक न्यू है अर्ली स्टेजेस में, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिएटिव वेज की ज़रूरत होगी। Only recently have our technology and techniques been up to the task of finding exoplanets. Exoplanet जो planets हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है। अभी ही रिसेंटली कुछ हमारी चीज़ अप टू डेट हुई है टेक्नोलॉजी, जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर प्लैनेट्स की सर्वे कर सके। द क्वेस्ट मीन्स सर्च took a huge leap forward in 2000 when Hubble studied the exoplanets HD। ये कोई प्लेनेट का नाम है, एक्सोप्लैनेट जो हमारे सिस्टम से सोलर सिस्टम से बाहर है। एक्स्ट्रा सोलर भी ऑलमोस्ट सिनोनिम दोनों। प्लेनेट known to make transits mean passing across the face of its star. Hubble became the first telescope to directly detect means find out in exoplanets atmosphere and survey its makeup और composition। तो अभी एडवांसमेंट हुई है जब हबल ने स्टडी किया था एक्सोप्लैनेट को, बाहर एक्स्ट्रा सोलर मतलब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर प्लैनेट की स्टडी जब की थी, और वहाँ पर वो पासिंग भी कर रहा था, मतलब मूवमेंट भी उसमें ट्रांजिशन भी हो रही थी। हबल पहला टेलीस्कोप बना जिसने डायरेक्टली फाइंड आउट किया है एक्सोप्लैनेट की जो मेकअप है, कंपोजिशन है। As a planet passes between its star and us, a small amount of light from the star is absorbed by the gas in the planet's atmosphere, leaving chemical fingerprints in the star's light। जैसे ही ये प्लेनेट जो है स्टार्स और हमारे दरमियान पास होती है, तो इसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, और फिर ये पीछे जो है फिंगरप्रिंट्स लाइट में रह जाती है स्टार्स की। इन द केस ऑफ इट अगेन कोई एक्सोप्लैनेट एक्स्ट्राप्लैनेट है। डिटेक्टेड मीन फाइंड आउट, सिग्नेचर मीन signs of sodium that did not belong to the star. It was the mark of sodium gas in the atmosphere of the planet। इसमें हुआ यहाँ पर उन्हें सोडियम की साइंस जो है फाइंड आउट किए। Since then astronomers have discovered many more planets
transiting their stars and have used Hubble to investigate means survey. Some of those planet atmosphere in the atmosphere at the located 63 light years away. Hubble detected mean found out methane. This was the first organic molecule identified in the atmosphere of a planet outside our solar system. इसके बाद काफ़ी डिस्कवरीज हुए है, सर्वे हुई है, उसमें से फिर हबल ने ये आइडेंटिफाई किया फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात हो रही है. In 2018, astronomer Hubble conducted the first spectroscopic mean instrumental survey जो स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल करे of several Earth-sized planet orbiting mean revolving rotating in their star's habitable zone, a region at a distance from the star where liquid water, the key to life as we know it, could exist on the planet's surface, only 40 years light away, a stone's throw on the scale of our galaxy. Scientists found 7 planets orbiting already revolving, rotating, circulating the dwarf star trap. अब ये कोई स्टार जो dwarf star है उसका नेम है. 4 of these planets lie in the habitable. Habitable mean that can be resided, that can be lived and livable, जहाँ पर रहा जा सकता हो. Zone mean area, place. अब ये पैराग्राफ में वो बता रहा है कि 2018 में एस्ट्रोनॉमर ने स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वे किया. इसकी साइज़ भी बता रहा है. नहीं, साइज़ नहीं, ऐसी जगहों का हैबिटेबल जोन का मतलब जहाँ पर रहा जा सकता हो, जहाँ पर रिसाइडिंग पॉसिबल हो, लिविंग पॉसिबल हो, क्योंकि वहाँ पर वाटर फ्रॉम द स्टार वेयर लिक्विड वाटर द की टू लाइफ इज गुड एग्जिस्ट, क्योंकि वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी थी. साथ में 40 मतलब ज़्यादा डिस्टेंस अवे नहीं था ये रीजन बाकी रीजन से. फिर उसके बाद फाउंड 7 प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग, वहाँ पर रोटेटिंग 7 प्लैनेट्स को भी जो कि ये स्टार टेपेस्ट के अराउंड वो सर्कुलेशन कर रही थी. इनमें से 4 जो थे वो हैबिटेबल जोन में थे. Hubble revealed mean exposed, disclosed, showed that at least 3 of the habitable zone exoplanets do not seem to exhibit means show, display, puffy means swollen, hydrogen rich atmosphere similar to gaseous planets such as Neptune. This means the atmospheres may be more shallow means hollow, not deep, and rich in heavier gases like those found in Earth's atmosphere such as carbon dioxide, methane and oxygen. हबल ने ये भी रिवील किया है कि हैबिटेबल जोन में एक्सोप्लैनेट्स जो कि हैबिटेबल उसमें से कम 3 ऐसी है जो डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं ऐसी एटमॉस्फेयर जो जहाँ पर हाइड्रोजन भी है और जो स्वोलन हो. और ये किस चीज़ की तरह होती है, गैशियस प्लैनेट जिस तरह नेपच्यून. इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा इसमें गहराई नहीं है बल्कि शैलो है, और इसी तरह हेवियर गैसेस भी ज़्यादा है जो हम यहाँ पर पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑक्सीजन. एज वी ट्राई टू स्टडी smaller and smaller planets, we will need even greater precision means accuracy enabled by more powerful telescopes and advanced technologies such as those provided by the James Webb Space Telescope. Someday the kind of atmospheric observation Hubble is making could reveal, show, expose the chemical signatures, signs of life on a far off world. If life does exist among the stars, this could be how we find it. क्योंकि ये स्टडी हो रही है स्मॉलर प्लैनेट्स की, तो एक एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होगी जो पावरफुल टेलीस्कोप को इनेबल करेगी कि वो, और साथ में बाकी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी जिस तरह
ये जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। तो इससे क्या होगा कि समडे ये पॉसिबल होगा फ्यूचर में कि फार ऑफ प्लैनेट्स पे, फार ऑफ वर्ल्ड्स पे हमें साइंस मिले कि हाँ वहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, पॉसिबल है। Exoplanets have always been and still are difficult to find. Seeing them directly is like looking for a firefly kind of insect to a lighthouse from a mile away. Astronomers have had to devise invent ईजाद करना clever and highly precise exact techniques to uncover means open reveal disclose exoplanets जो हमारे planets से बाहर सोलर सिस्टम से बाहर planets है। एक्सोप्लैनेट्स को फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट अब भी है। डायरेक्टली इनकी सर्च करना ऐसे है जैसे हम किसी फायरफ्लाई एक स्मॉल इंसेक्ट को फाइंड आउट करें। तो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ज़रूरी है कि वो इन्वेंट करे कोई एग्जैक्ट टेक्निक इन एक्सोप्लैनेट्स को एक्सपोज करने के लिए। हबल कंटिन्यू टू मेक सिग्निफिकेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी contribution to the search for and study of planets around other stars. Its longevity, stability, and instrumental sensitivity make it a unique, exceptional asset mean resource in the quest search for understanding alien means unknown worlds. हबल की ये जो कंट्रीब्यूशन है ये कंटिन्यूड है प्लैनेट्स की स्टडी, स्टार्स की स्टडीज़। अब इसकी लॉन्जिविटी मतलब ड्यूरेशन ज़्यादा स्टेबल भी है और सेंसिटिविटी काफ़ी चीज़ों को व्यू कर सकता है। इसकी वजह से ये एक एक्सेप्शनल रिसोर्स बना है एलियन अननोन वर्ल्ड्स की सर्च में। लास्ट पैराग्राफ। द ग्रेट कैथेड्रल्स वर मॉन्यूमेंट्स to the glory of God. The Great Pyramid were monuments to the fear of death. The Great Wall of China was the ultimate defense fortress. The Panama Canal was a timely revolution in the global transportation. The Hubble Space Telescope has earned a place in history text that will be written. A millennium means 1000 years. From now, it will be remembered as one of the greatest manifestation embodiment expressions, physical shape of pure human curiosity. Curiosity means inquisitiveness, the search or the quest or the thirst to know more. जिस तरह ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर शेप डिज़ाइंस की बात हो रही है, चाइना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट पिरामिड और कैथेड्रल, ये जिस तरह मॉन्यूमेंट्स रही है, नॉन चीज़ें रही है आगे जनरेशन्स में, इनकी रोल्स हैं, इनकी कंट्रीब्यूशंस है। इसी तरह हबल की भी सालों बाद, हज़ारों साल बाद हबल की कंट्रीब्यूशन के बारे में भी लिखा जाएगा और इसको याद किया जाएगा एक मैनिफेस्टेशन, एक एम्बोडमेंट कि ह्यूमन क्यूरियोसिटी को ये रिप्रेजेंट करेगा। ह्यूमन क्यूरियोसिटी की ये एक फिज़िकल शेप होगी, उसकी एक्सप्रेशन होगी, इसकी मैनिफेस्टेशन होगी।